Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel. Today our topic is story writing, and we will learn about the elements of the story. And this lesson is for the class of for middle and secondary classes. So basically there are two types of elements of story. The one are the basic elements of the story, and the others are advanced elements of the story. And the basic elements are setting, character, plot, conflict, and theme. And advanced elements are point of view, tone, style, and mood. Now we discuss the basic elements of the story. First of all is the setting of a story. So a story setting refers not only to the physical location but also the time the action takes place. It is where and when of the story. इसको डिस्क्राइब करने से पहले अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि हाउ टू राइट अ स्टोरी, और उसमें 6 क्वेश्चन थे जिनकी मदद से हमने आउटलाइन बनाई थी. तो वही चीज़ उसमें जो 2 क्वेश्चन है, यानी व्हेन एंड वेयर, they are basically describing the setting of a story. So we can say the location, physical location, and the action takes place in which event or situation. So these two things, the location means the answer of the question where, and when, that refers to the time period of the action. यानी टाइम और लोकेशन, ये दोनों चीज़ें सेटिंग ऑफ द स्टोरी कहलाते हैं. उसके बाद है कैरेक्टर. सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्टोरी, कैरेक्टर्स आर मोस्ट ऑफ्टन पीपल और एनिमल्स. राइटर्स यूज कैरेक्टर्स to perform the actions and speak the dialogue of a story. They move a story's plot forward. They are the who of the story. So character क्या है? Character basically this is the answer of the WH question who, जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था. तो character ही basically events को आगे बढ़ाने में help out करते हैं. तो sometimes the characters are people and sometimes animal. तो एनिमल स्टोरीज़ बच्चे अक्सर देखते हैं, बड़ी फेमस स्टोरीज़ हैं आजकल. जैसे सिम्बा एक स्टोरी थी, तो उसमें एक लायन जो था, दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. दैट वाज द, वी कैन से, प्रोटैगनिस्ट और द हीरो ऑफ द स्टोरी. नेक्स्ट इज द प्लॉट. द प्लॉट relates the events that happen in a story. Plot can be further divided into sub-elements such as introduction, rising action, climax, falling action, and resolution. And it is the what of the story. Plot usually begins with the problem and ends in the story's resolution. तो प्लॉट क्या है? प्लॉट बेसिकली ये तमाम इवेंट्स को आपस में रिलेट करता है. ये इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता द राइजिंग एक्शन, फिर उसके बाद क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी. क्लाइमेक्स के बाद स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता एंड की तरफ जाती है, उसको हम फॉलिंग एक्शन बोलते हैं, और एंड को रेजोल्यूशन या एंड भी कह सकते हैं. इट इज़ द व्हाट ऑफ द स्टोरी. तो हमने जो WH क्वेश्चन पढ़े थे उसमें व्हाट का आंसर आपको प्लॉट की शक्ल में मिलता है. अब प्लॉट को ज़रा हम ग्राफ में देखते हैं कि प्लॉट है क्या. सो यू कैन सी हियर, दिस इज़ द प्लॉट ऑफ अ स्टोरी. तो हर स्टोरी के बेसिकली आपके पास 3 पार्ट हैं हर स्टोरी के.
जिसमें बिगिनिंग है, मिडल है और एंड ऑफ द स्टोरी है। तो बिगिनिंग में आप देखते हैं सबसे पहले एक्सपोजिशन है। बेसिकली एक्सपोजिशन शोज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। जब कोई स्टोरी स्टार्ट होने लगती है तो उस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में कुछ डिटेल बताई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर हीरो ऑफ द स्टोरी है तो वो कहाँ रहता था, वो क्या करता था, उसको उसके वो किस सिचुएशन में था, तो वो सारी चीज़ जो डिस्क्राइब की जाती है स्टोरी के बारे में या हीरो के बारे में, दैट इज़ द एक्सपोजिशन ऑफ द स्टोरी। फिर इनसाइटिंग इंसिडेंट। बेसिकली इनसाइटिंग इंसिडेंट इज़ द फर्स्ट एंट्री ऑफ द हीरो इन द और फर्स्ट ये एंट्री ऑफ द कैरेक्टर इन द स्टोरी जब स्टोरी स्टार्ट होती है। उसके बाद है राइजिंग एक्शन। ग्रेजुअली डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो स्टोरी को आगे मूव करते हैं और डिफरेंट इवेंट्स के को आपस में कनेक्ट होने से राइजिंग एक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। देन सम क्राइसिस और द प्रॉब्लम्स अकर इन द स्टोरी और वो प्रॉब्लम स्टोरी को क्लाइमेक्स तक लेके जाते हैं। क्लाइमेक्स वी कैन से दिस द पीक ऑफ द इवेंट्स, जिसमें अगर आपके पास ऐसी स्टोरी है जिसमें कोई हीरो है, कोई विलन है, फिर उसमें फाइट है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसका पीक जब हाईएस्ट पॉइंट पे चली जाए और जो ऑडियंस है वो फुली कंसंट्रेशन के साथ उस पॉइंट पे फोकस करके उस स्टोरी को सुनते हैं या देखते हैं उस टाइम के ऊपर, तो 100% वी कैन से एट दैट टाइम द concentration is taken by the story. और देन ग्रेजुअली स्टोरी गोज टूवर्ड्स द एंड और उस प्रोसेस को, उन इवेंट्स को जो एंड की तरफ लेके जाते हैं हम उनको फाइलिंग एक्शन बोलते हैं और स्टोरी एंड होती है रेजोल्यूशन की फॉर्म में। तो रेजोल्यूशन समटाइम्स इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग एंड समटाइम्स इट विल बी अ ट्रेजेडी। Next element is conflict, and conflict is very important for the story. Every story requires a conflict, and this conflict can be thought of as a challenge or problem that drives the action of the story. No conflict, no story. याद रखें, अगर conflict नहीं है, problem नहीं है आपकी story में, तो story नहीं develop की जा सकती। Setting up series of cause and effect events. तो आपने स्टोरी के लिए काज एंड इफ़ेक्ट इवेंट्स को डेवलप करना है। डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात स्टोरी के अंदर आपको ऐड करने पड़ेंगे जिसमें कॉन्फ्लिक्ट शामिल होगा और तब जाके स्टोरी इंटरेस्टिंग भी होगी और डेवलप भी हो सकेगी। कॉन्फ्लिक्ट गिव्स द इवेंट्स देयर वाई। तो हमने जो वाई पढ़ा था पिछले लेसन में कि वाई द इवेंट्स हैपन, तो वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सारे इवेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। सो वी कैन से कॉन्फ्लिक्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट इज़ द थीम एंड अ लिटिल मोर एब्स्ट्रैक्ट देन द प्रीवियस एलिमेंट्स। ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये आपको विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा जब तक कि आप पूरी स्टोरी को सुन नहीं लेते या देख नहीं लेते। So the theme refers to the underlying insight, the moral or idea. तो थीम क्या है? थीम बेसिकली इनसाइट है। वी कैन से इट इज़ अ हिडन मैसेज। ये मॉरल है, ये आइडिया है दैट द राइटर इज़ एक्सप्रेसिंग थ्रू द स्टोरी। इट इज़ ऑफन थॉट ऑफ अ मैसेज ऑफ द स्टोरी। तो इसी थीम को हम मैसेज ऑफ द स्टोरी भी कह सकते हैं। Towards the end of the lesson, we just review it. Today we have learned about the elements of the story. तो हमने देखा there are two types of elements. One are basic elements and the other are the advanced elements, but in this lesson we have learned about the basic elements. So first of all, the setting, and setting means what and where and uh, where and when of the story, means कि ये स्टोरी किस जगह पे परफॉर्म की गई और कौन सा ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड क्या था। वी कैन से इट वाज अ डे, इट वाज अ नाइट, वेदर कैसा था, सिचुएशन कैसी थी, सेटिंग कैसी थी। ऑल दीज थिंग्स आर
included in the first element. Next is the character of the story, which is the who of the story. We can say this is the answer of the who. And characters are very important. They develop the events in a story. Next is the conflict, and conflict is very important. We can say this is the problem that occurs in the story, and without a conflict there is no story. Theme is of the story, which is an abstract idea, or we can say it is the moral of the story. It is an idea given by the writer to the listener or the audience. And the last is the plot, which is we can say this is the beginning, middle, and the end of the story. Plot begins with the background of the story, and it ends with the resolution, or we can say it ends with some results. Sometimes it is a happy ending, and sometimes it is tragedy. Now this is your home assignment. A story Hamlet has been given in the description of this video. Read the story and try to find the following elements: setting, character, conflict, theme and plot. बेसिकली ये स्टोरी ये एक प्ले है शेक्सपियर का, जिसमें से ये स्टोरी एक्सट्रैक्ट की गई है, शॉर्ट स्टोरी बनाई गई है बच्चों के लिए। वो इसको देख के तो फिर आइडिया उनके अंदर ये जो एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी हैं वो आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस वीडियो का भी लिंक दिया गया है, टेक्स्ट फॉर्म में भी स्टोरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं लिंक पे क्लिक करके, और इस टेक्स्ट को कॉपी करके आप इसमें से सेटिंग, कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, थीम और प्लॉट, ये सारे एलिमेंट्स भी आप इसमें से डिस्कवर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेसन जो होगा वो है एडवांस्ड एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, जो कि बेसिकली वी कैन से as for the senior students, for students of metric and FSC. And at the end I would like you to share this video to the students, and if you did not subscribe it, please click on the subscribe button and hit the bell icon for the upcoming lessons. And if you have some queries or suggestions, just email me, or you can send me message on the live chat on YouTube. Thank you very much.